lecture of chapter sound. Okay, let me spotlight myself first so that you can see myself. All right. Okay. So let us get started with the lecture, students. Start with the lecture. Previous lecture. Achha, are you able to hear me properly? Are you able to hear me properly, students? All right, cool. Let us get started with the lecture, students. Now we are going to discuss about the sound. Right? We are going to continue with the sound itself. Achha, in the previous lecture, students, what did we see? In the previous lecture, we saw that for sound to travel from one point to another, it needs a medium. For sound to travel from one point to another, wow, Shreya, sound डिस्कस किया था. साउंड में क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट? साउंड में हमने ये डिस्कस किया था कि साउंड को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो उसको एक मीडियम की जरूरत होती है. इट रिक्वायर्स अ मीडियम. मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. A medium can be solid, liquid and gas. Since space में there is no medium, इसलिए space में कोई भी कितना भी बड़ा will you be able to hear it, students? Will you be able to hear that sound? Nahi. Right? If it's in space, students, however huge the sound is, however loud the sound is, students, you still won't be able to hear because space में medium नहीं होता. Space में medium नहीं होता, students. And here, the sound requires a medium to travel. The sound requires a medium to travel. कैसे हमने ये prove किया, students? How did we prove that? Sound requires a medium to travel. How did we prove that, students? We proved that using Bell-Jar experiment. That's very nice. सब answer Shreya दे रही है, बाकी क्यों नहीं answers दे रहे? I can't see chats coming from your side, students. I want you to chat the answers. Chat करना पसंद है. Please chat the answers. Send me the answers. I'll be able to read those answers, right? All right, students. So here, the Bell-Jar experiment help us to prove that a sound needs a medium to travel. साउंड के पास अगर मीडियम नहीं आएगा, साउंड के पास अगर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए, तो साउंड क्रिएट नहीं होगा. So this is what, students, we have seen in the previous lectures. Now, let us move with the next part of the lecture, students. Let us now move to the next part of the lecture. Now, what are we going to see is, we are going to see what kind of density and pressure pattern is created in case of compression and rarefaction, students. So now let us talk about compression. Let us talk about compression. So यहाँ पे क्या है, students? Let us say यहाँ पे speaker है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, students? Speaker है. अभी speaker में से, students, जब भी sound निकलेगा, तभी क्या generate होगा? Speaker में से जब भी sound निकलेगा, तभी compression generate होगा. Compression के बाद, students, compression के बाद क्या generate होगा? Compression के बाद we are going to have rarefaction. Compression के बाद we are going to have rarefaction. Alright, moving on. After rarefaction, students, again, what are we going to have? We are again going to have compression. Again, we are going to have compression. Okay. Now again we are going to have compression. Compression के बाद वापस, students, compression के बाद वापस क्या मिलेगा अपने को? वापस अपने को rarefaction मिलेगा, right? So when the sound is created, what we have is, we have series of compression and rarefaction. We have series of compression and rarefaction. So we have compression and rarefaction. Compression followed by rarefaction. Everybody understood the word? तो हमने तो ये देखा था, we have already learned this in the previous lecture, students. अभी नया क्या पढ़ने वाले students? अभी नया क्या पढ़ने वाले? तो मुझे बताओ, पहले let us say compression rarefaction नहीं था, air normal था, disturbance नहीं था, students. There was no disturbance. Right? Are you facing issues? Are you facing issues with the sound, students? All right. One second. Let me adjust the earphones again. All right.
Okay, are you able to hear it now? Okay, so now let us get started. Now let us now get started. Okay, so here, what did we see, students? What did we see? Here we saw that compression is followed by reflection. Compression is followed by reflection. अच्छा, अभी स्पीकर ऑन होता है तभी कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होता है, बट जब भी स्पीकर ऑफ रहेगा, will there be disturbance, students? Will there be disturbance? There is going to be no disturbance. There is going to be no disturbance. There is going to be no disturbance, right? और moving on, तो जब भी students जब भी ये स्पीकर बंद रहेगा, तभी तभी ये जो एयर है, कहने से एयर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी एंड प्रेशर स्टेबल रहेगा. डेंसिटी एंड प्रेशर कैसे रहेगा स्टूडेंट्स? स्टेबल रहेगा. डेंसिटी एंड प्रेशर इज गोइंग टू बी स्टेबल. डेंसिटी एंड प्रेशर इज गोइंग टू बी स्टेबल, राइट? और मूविंग ऑन, जैसे कंप्रेशन रिफ्लेक्शन आया स्टूडेंट्स, कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आएगा. देखो यहाँ पे इफ यू सी, ये पार्ट में क्या है? ये पार्ट में कंप्रेशन है, ये पार्ट में क्या है? रिफ्रैक्शन है, ये पार्ट में वापस क्या है? compression, and here in this part we have refraction students. So now let us say students, let us say ये जो line है that is the density and pressure का line. Okay, अभी मुझे बताओ compression में when the air molecule comes together students, when the air molecule comes together, tell me students, tell me pressure and density increase होगा या decrease होगा? करेक्ट, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज होगा. क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज होगा. अच्छा, इफ यू ट्राई टू सी स्टूडेंट्स, इफ यू ट्राई टू सी, इफ यू ट्राई टू सी ऊपर का वैल्यू, ऊपर का वैल्यू, इज इट गोइंग टू बी मोर प्रेशर वाला वैल्यू और लेस प्रेशर वाला वैल्यू? ऊपर का जो पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर मोर प्रेशर होगा या लेस प्रेशर होगा? मोर प्रेशर होगा या लेस प्रेशर होगा स्टूडेंट्स? ऊपर का क्या होगा स्टूडेंट्स? मोर प्रेशर होगा. ये लाइन के नीचे कैसे होगा स्टूडेंट्स? लेस प्रेशर होगा. लाइन के नीचे कैसे होगा? लेस प्रेशर होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो स्टूडेंट्स कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स. कंप्रेशन में क्या होता है? प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज होता है. तो ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा, राइट? लेकिन रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन में प्रेशर कैसे होता है स्टूडेंट्स? कम हो जाता है. रिफ्रैक्शन में प्रेशर एंड डेंसिटी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डिक्रीज होता है. सो अपने को वेवफॉर्म कैसा मिलेगा? सब नीचे जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे माउंटेन बनेगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑलराइट, अगेन when we have compression, when we have compression, the pressure and density is going to increase. The pressure and density is going to increase. When we have refraction, the pressure and density is going to decrease, students. So this is the kind of waveform we get, students. This is the kind of waveform we get, right? तो एक बार compression में pressure and density increase होता है, जब भी refraction होता है students, सभी pressure and density decrease हो जाता है. वापस pressure and density increases, pressure and density decreases, students. So this is the concept of density profile in case of sound waves. What is this, students? This is pressure and density profile in case of sound wave. In case of sound waves, right? So students, okay. Sneha, Shreya, Shreya. Shreya, please unmute yourself, beta. Shreya.
density and pressure profile. What is this, students? This is the density and pressure profile of compression and refraction. Compression and refraction, students. So this is what I understand, students. This is what I understand. All right. Now if you talk about compression and refraction, students, एक compression and एक refraction, students, is one cycle of vibration. क्या बोला मैंने, students? One compression and one refraction. ये क्या हो गया? एक cycle हो गया. क्या हो गया, students? एक cycle हो गया. जैसे morning and night, that complete 124 hours is one day, right? Complete 24 hours is one day. Day and night together forms one whole day, isn't it, students? Basically, students, one compression and one refraction forms one cycle of vibration. Did you understand this? Did you understand this? मैंने क्या बोला? एक compression and एक refraction, students, क्या form करता है? एक cycle form करता है, एक cycle of oscillation form करता है, या एक cycle of vibration form करता है. Everybody understood this? Everybody understood this, students? So one compression, and again I repeat, one compression and one refraction, students, it forms one cycle of vibration. It forms one cycle of vibration. Now, students, once you understand this, we are going to understand the concept as frequency. Frequency. Have you heard this word frequency? Have you heard this word frequency, students? Have you heard this word frequency? तो frequency माने क्या? What do you understand by frequency? तो frequency मतलब the number of cycles of compression and refraction in 1 second. मैं वापस बोलता हूँ. What is frequency, students? What is frequency? Frequency is number of cycles of vibration. कितने टाइम में, students? कितने टाइम में? 1 सेकंड में. कितने टाइम में, students? In 1 second, students. So what is frequency, students? What is frequency? Frequency मतलब क्या है? Frequency मतलब number of cycles of vibration in 1 second. Number of cycles of vibration in 1 second. And एक cycle मतलब कितना? एक cycle मतलब कितना, students? एक cycle मतलब one compression and one refraction, students. One compression and one refraction. Everybody understood this? So frequency is number of vibrations in 1 second. The number of cycles of vibration in 1 second. Number of vibrations in 1 second. मतलब frequency. Can someone tell me what is unit of frequency, students? Can unit of frequency, students? Can someone tell me what is unit of frequency? Frequency ये जो frequency है ना, students, ये frequency का concept निकाला था Hertz ने. किसने निकाला था, students? Hertz ने. किसने निकाला था? There was a scientist called as Hertz. उसने क्या किया था? ये frequency का concept निकाला था, Hertz. So इसको क्या किया? उसको हमने शाबाशी दिया. Hertz को हमने क्या किया, students? शाबाशी दिया. हमने क्या किया? Frequency उसने निकाला था, Hertz ने निकाला था concept को. इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? Frequency का unit, इसका unit दे दिया Hertz. SI unit is Hertz. Frequency का SI unit is Hertz. Frequency का SI unit is Hertz. Everybody understood this? Everybody understood this? So what did we learn so far, students? What did we learn so far? We learned that one compression and one refraction, students, forms one complete vibration. क्या बोला मैंने? One compression and one refraction forms one complete vibration. क्या form करता है, students?
equal vibration form करता है. Yes, all right. Moving on, students. Moving on. Now my next question is. अगर मैंने बोला 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है. So my simple question to you students, वो साउंड कितने कंप्रेशन जनरेट करेगा एक सेकंड में? सिंपल क्वेश्चन टू यू स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन टू यू. मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है. तो एक सेकेंड में कितने कंप्रेशन जनरेट होंगे स्टूडेंट्स? वेरी नाइस. कितने कंप्रेशन जनरेट होंगे स्टूडेंट्स? 500 कंप्रेशन जनरेट होंगे. कितने जनरेट होंगे स्टूडेंट्स? 500 कंप्रेशन जनरेट होंगे. 500 कंप्रेशन जनरेट होंगे एंड 500 रिफ्रैक्शंस जनरेट होंगे. Everybody understood this? Everybody understood this? All right. Now the next question is. मैंने अगर बोला फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी है, लेट अस से ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज. 1000 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स. 1000 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी. 2 सेकेंड में कितने साइकिल्स बनेंगे कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के? 2 सेकेंड्स में कितने साइकिल बनेंगे कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स. कितने बनेंगे? 2000 बनेंगे. एक सेकेंड में स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है तो एक सेकेंड में 1000 वाइब्रेशंस बनेंगे. 2 सेकेंड में 2000 वाइब्रेशंस बनेंगे. Everybody understood this? So this is the concept of frequency. What is the students? This is the concept of frequency. Frequency मतलब क्या? Frequency is number of vibrations in 1 second, or number of cycle of vibrations in 1 second, right? All right. Does anyone have a question? Please raise your hands if you have a question. If you need to ask something, please raise your hands. If you have to ask something, if you have any doubts, students, please raise your hands, students. If you have any questions, please raise your hands. All right. I am going to ask you to unmute, students. I am going to ask you to unmute. If you did not understand, please ask. अगर किसी का हाथ रेस नहीं है, everyone understood everything. क्या बात है, बड़ी स्मार्ट बच्चे. Very smart. All right. So students, now that we have understood the concept of frequency, now let us understand few different concepts. अच्छा, अभी तबला बजाया, गिटार बजाया, फ्लूट बजाया, सबका साउंड सेम होता है, अलग-अलग होता है? सबका साउंड सेम होता है स्टूडेंट्स या अलग-अलग साउंड होता है? That's correct. Every instrument creates different sound. Now students, this different sound is because of different frequency. The different sound produced by different instrument is because of different frequency. Everybody understood this? आपका आवाज, मेरा आवाज, आपकी मम्मी का आवाज, आपके डैडी का आवाज सेम है क्या स्टूडेंट्स? सेम है क्या? नहीं, इट इज नॉट सेम. क्यों सेम नहीं है स्टूडेंट्स? बिकॉज जहां से हम आवाज निकालते हैं स्टूडेंट्स, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है. आपके आवाज का एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी मम्मी की आवाज का एक फ्रीक्वेंसी है, आपके डैडी की आवाज का एक फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स. सो द साउंड it depends upon the frequency. The sound depends upon the frequency. And ये frequency कहाँ से generate होता है students? Frequency source से generate होता है students. So different objects create different sound. I repeat, different objects create different sound. Everybody understood this? And ये different sound क्यों generate होता है students? Because every object has different frequency or different vibrations. Did you understand this? Everybody understood this? All right. Achha. Do you listen to songs?
Do you listen to songs? Yes, you listen to songs, right? So songs में ऐसा है क्या सिर्फ एक गिटार बजा रहा है कोई, ऐसा है क्या सिर्फ गिटार बजाता है कोई, ऐसा है क्या कोई तबला बजाता है सिर्फ? Is it so, students? Is it so? No. When you listen to a song, we all know that we have different instruments used, right? तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे. Now a song, it consists of different frequencies coming together. अभी ये बहुत मजेदार बात है, listen to it very carefully. Song is made up of different frequencies and song के notes होते हैं. Have you heard about this? Sound का note होता है, low note, high note, low note, high note. Are you understanding this much? तो note मतलब क्या students? Note is nothing but mixture of frequency. What is note, students? Note is nothing but mixture of frequency. What is note, students? Note is nothing but mixture of frequency. अच्छा, amazingly students, if you try to understand, अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो ना? अरिजीत सिंह के गाने कब सुनते हो? जब भी ब्रेकअप होता है, जब भी ब्रेकअप होता है तभी अरिजीत सिंह याद आता है, right? When you listen to his songs, how do you feel, students? How do you feel when you listen to songs of Arijit Singh, students? Sad, very nice. कैसे लगता है? Sad इंसान है वो, right? Sad गाने गाता है. So students, here ये sad क्यों लगता है आपको? Because you listen to the low notes. What do you listen to, students? You listen to low notes. जब भी आप low notes के गाने सुनते हो ना students, तभी आपको क्या लगता है? थोड़े इमोशनल हो जाते हो. कैसे हो जाते हो? You become a little emotional. Whereas students, पब्लिक डिस्कोज में, स्टूडेंट्स डिस्कोज में, पब्स एंड डिस्कोज में कौन से गाने बजते हैं? हनी सिंह, यो हनी सिंह बजता है ना स्टूडेंट्स. पार्टी सॉन्ग, whenever you listen to party song, what do you feel, students? What do you feel? You feel happy, you feel enthusiastic, yes or no? You feel energetic. Very nice, students. डांस करने लगते हो ना? Yes. So students, why does that happen? Because the party song, it contains high notes. The party song contains high notes. Are you understanding this? And when you listen to high note, students, at that point of time, you automatically feel happy. You automatically feel confident. So music has a huge impact. Music has a huge impact on humans' emotions, students. Are we understanding this? तो ये notes क्या होते हैं, students? What are notes? नोट्स मतलब पैसा होता है क्या, स्टूडेंट्स? नोट्स मतलब पैसा होता है क्या? नहीं. नोट्स मतलब क्या, स्टूडेंट्स? नोट्स मतलब क्या? नोट्स इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. नोट्स इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. एंड ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कहां से आया, स्टूडेंट्स? Where did you get this different frequencies from? You got this different frequencies from different instruments. You got the different frequencies from different instruments. Everybody understood this? Everybody understood this? चलो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है? ऑलराइट, चलो. विंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल बताओ. विंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल बताओ. क्या बात है? फ्लूट है. वेरी नाइस. फ्लूट है. और क्या है? और क्या? फ्लूट. और क्या? फ्लूट ही पता है सबको. Is there any else? Are there any other examples? Saxophone. All right. All. Mouth organ. Very nice. Very nice. Very nice. Horn. Very nice. Very nice. Shehnai. Have you heard about Shehnai? Shehnai. Trumpet. Very nice. Very nice. Very nice. So students, Shehnai भी होता है, which is a wind-based instrument, students, right? So wind-based instruments है. Wind-based instruments, students, वो जो पाइप होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, students? आप जब भी उसको wind-based instruments को आप कवर करते हो ना, होल्स को, जब भी आप होल्स को कवर करते हो ना, students, तभी क्या होता है? जब भी आप होल्स को कवर करते हो, students, तभी क्या होता है? तभी frequency change होता है, students. क्या change होता है, students? Frequency changes. Right?
All right, moving on. Chalo. Give me examples of string-based instruments. Give me examples of string-based instruments. Guitar, very nice. Violin, very nice, very nice. Sitar, very nice. Veena, very nice, very nice. अच्छा मुझे बताओ general knowledge question in these instruments, in string-based instruments, how do you change the frequency? In string-based instruments, how do you change the frequency, students? कैसे करते हैं frequency change? बटन नहीं होता कुछ भी. क्या बात है? Very nice, very nice. क्या करते हैं आप? String को tight करते हो. क्या करते हैं students? क्या करते हो students? String जो होता है ना, string जो होता है ना, सितार, गिटार, इसमें जो string होता है students, उसको क्या करते हो? Tight करते हो. Tight करते हो, loose करते हो. When you tighten or loosen the string, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Everybody understood this? So this is the concept of notes and this is the concept of frequency. This is the concept of notes and this is the concept of frequency. अच्छा, अगर मैंने आपकी आंखों में पट्टी बांधा, अगर मैंने आपकी आंखों में पट्टी बांधा, will you be able to identify a boy talking to you and a girl talking to you? Will you be able to identify a boy talking to you and a girl talking to you? Yes. कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? बॉयज का आवाज कैसे होता है? बॉयज का आवाज कैसे होता है? थोड़ा सा हेवी होता है. बॉयज का आवाज कैसे होता है स्टूडेंट्स? It is a little heavier. Yes, it is a little heavier. It is little rough. And if I talk about girls का voice कैसे होता है स्टूडेंट्स? गर्ल्स का वॉइस सॉफ्ट होता है. कभी कभी गर्ल्स के वॉइस में श्रिलनेस होता है. कभी कभी किसी लड़की का आवाज सुन के कांटे आ जाते हैं आंख पे. कभी कभी कांटे आते हैं आंख पे स्टूडेंट्स. यस, तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ द frequency. The variation in sound between a boy and a girl is because of the frequency, students. Everybody understood this? So this is the concept of frequency. Everybody write the definition of frequency, students. Give heading frequency. Give heading frequency. Give heading frequency. What is the definition of frequency, students? What is frequency? Frequency is number of cycles of vibrations. Number of cycles of vibration. Number of cycles of vibration in dash. In dash. Number of cycles of vibration in dash. एक घंटा, एक मिनट या 1 सेकेंड स्टूडेंट्स. वन क्या? इन क्या? इन 1 सेकेंड क्या? इन 1 सेकेंड. That's correct, students. So number of cycle of vibrations in 1 second, right? And next point, SI unit of frequency is dash. SI unit of frequency is dash. That's correct, students. क्या होता है SI unit? Hertz. क्या होता है? HERTZ. Hertz. Yeah, you can simply write capital letter H, small letter Z, students. Right? So SI unit of frequency is Hertz. Right? So that's it about today's lecture, students. I hope you understood the lecture. Do you have any questions, students? Do you have any questions? Good evening, guys. How are you all? Yes. So, very quickly, get your English books ready. We can very quickly begin with what we were doing in the last lecture. Am I correct? Yes, I'm great too. Thank you. Yeah. So,
A very quick recap of what we did in the last lecture. Anyone, which topic were we doing back then? Clauses. Very good. Okay. Very quickly, what is the definition of a clause? What do you mean by clause or clauses? What do you mean by that? Very quickly, send me your answers. Okay, so you can text me in the account of Rajvi Thakkar. Okay. Yes, guys. What is the definition? Very good, very good. Nishita said that a clause is a group of words containing one finite verb. So it is a group of words containing one finite verb, and we had revised what a finite verb is in the last class. A finite verb is a verb that shows you the tense, all right, and a subject is present or possible just before a finite verb. So, simply stating, a clause is a group of words containing one finite verb. Very clear with this? Yes or no, guys? Okay.